already see so many of you have already joined and are waiting for me. Thank you so much for joining. Hello, hello guys. Hi Kanika. Hello. Hello, hello. Hi Ranveer Kaur. How are you? I'm just waiting for some more people to join and हम जल्दी अपना लाइव सेशन स्टार्ट करेंगे just like another 3-4 minutes. Hi Saloni. Hi Priya. How are you guys? What's up? So okay, आज का हमारा टॉपिक इज वेरी इंटरेस्टिंग येट बेसिक है पर बहुत इंटरेस्टिंग है. थैंक यू कनका. आई डोंट हैव एनीथिंग ऑन माय स्किन राइट नाउ. Yeah, so yeah, only the basic skincare, the moisturizer and the serum, nothing else. Hi Shivani. Hi. Skincare routine. I don't have that much of an elaborate skincare routine because मेरी skin बहुत ही like combination है. Sometimes it is dry, sometimes it is oily. Nowadays it is combination, so it totally depends मेरी skin कैसे behave कर रही है on the day. So I just go in with the products. I try to and I like keeping it simple. I just don't lather my skin with so many products and ingredients. A basic moisturizer and a good sunscreen, which is a must in summers, and maybe a good night serum or something. So yeah. Yes, because I've already done my brows. So yeah, I'm done with the brows. I always like to keep my brows very simple until unless I am not doing a very heavy glam or something. Otherwise, what I do is I just fill in the sparse spaces that I have in my brows. Uske alawa, I just don't do much because I keep them, all like them keeping all natural. Okay, you can also आज के live session में I'll be asking you guys a question and आपको उसको आंसर करना है and in the end जो भी सही आंसर करेगा उसको बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट्स प्राइज मिलने वाला है at the end of the life. तो आपको मेरे साथ लाइव में टिल द एंड रहना पड़ेगा सो दैट यू कैन नो द क्वेश्चन एंड यू कैन आंसर इट करेक्टली एंड आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा व्हाट टिप्स एंड ट्रिक्स आई एम गिविंग यू सो दैट यू कैन आंसर द क्वेश्चन अच्छे से एंड में. ऑल्सो यू कैन ऑल्सो यूज कोड MISHA01 MISHA01 एंड गेट फ्लैट 25% ऑफ. मैं जितने भी आज प्रोडक्ट्स यूज करूंगी उन पे आप अगर मेरा कोड अप्लाई करोगे तो आपको फ्लैट 25% ऑफ मिलेगा. ऑलरेडी इतने अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स पे अगर आपको और भी ऑफ मिल रहा है तो इट इज़ अ वेरी वेरी ग्रेट डील एंड यू शुड डेफिनेटली ग्रैब देम. तो आज का हमारा जो लुक है इट इज़ अ बिगिनर्स मेकअप लुक एंड आई हैव few products from NY Bay and I will just show them to you जो कि मेरे definitely personal favorite products हैं. And when I say personal favorite, I just don't say them because I have to say them. Oh, actually, I do use them, so that is why I recommend these products. NYB is my favorite too. Earlier, I didn't used to, use many of the NYB products, but जब से I've tried them, I really loved them, and I enjoy and love using them. So okay, these are here are the few of the products that I have with me. I have quite the range, and I love collecting different shades, and I love using different shades. So I will start one by one, and I'll show you the products. Firstly, I have these two concealers here. I have these two concealers.
आई टोटली लव these concealers because बहुत लाइट वेट है एंड yet they have a very full coverage sort of finish. Thank you, Himani, Himanshi, thank you so much. तो या तो ये बहुत ही फुल कवरेज है. आई टोटली लव यूजिंग देम. I always rather than going in with the color corrector or something, I always using a darker shade of concealer. आई ऑलवेज जब भी कोई नेचुरल मेकअप करना है या एवरीडे मेकअप करना है या थोड़ा बिगनर्स मेकअप के लिए यूजिंग अ डार्कर शेड ऑफ कंसीलर इज द बेस्ट थिंग टू डू. दैट इज व्हाई आई ऑलवेज कीप टू शेड्स ऑफ कंसीलर्स विद मी. One is the lighter one and one is the darker one, and this is my first step towards doing the beginners makeup. I recommend it to everybody कि जब भी आपको अपना basic makeup start करना है and you don't know much about the products and you get confused which product to use first and which not to, always go in with a darker shade of concealer. उससे होता क्या है, आपके जितने भी कोई पिगमेंटेड एरियाज हैं या एक्ने मार्क्स हैं या कोई भी आपके फेस पर डिसकलरेशन है, आप उसको इजीली हाइड कर सकते हो, जो कि आपके आगे प्रोसेस में आपको इजी बनाता है आपके मेकअप लुक को. Many times you see people using such dark shades, orange correctors, green correctors. It is not necessary to use those all the time, because when you are a beginner you don't know much how to use those products and how to apply them, kitna apply karna hai and kitna nahi. So it is better that you go in with a darker shade of concealer which is two shades darker or a shade darker than your own skin tone. I preferably go with a shade darker. ज़्यादा डार्क चले जाओगे तो वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट टोन पे चला जाएगा. दैट इज नॉट व्हाट यू वांट. What shades I am holding? The shade that I have with me is, I will just let you know just a second. The shade. It is so tiny that I can just milk chocolate pretzel 02, and this is milk chocolate pretzel 04. 02 and 04 are the shades, guys. जो 04 है उसको मैं एज अ कलर करेक्टर स्लैश अपने बेस से पहले यूज करूंगी एंड आई विल अप्लाई डायरेक्टली विद द वॉन्ड. एज यू कैन सी, मैं इसको अब अप्लाई करना स्टार्ट करूंगी एंड यू कैन ऑटोमेटिकली सी दिस इज सो नाइस. जहाँ पर मेरे कोई पिगमेंटेड एरियाज है, फॉर एग्जांपल डार्क सर्कल्स हैं या आई हैव एक्ने मार्क्स थोड़े बहुत, like I have a little on the side, I have it on my forehead because it is summers and acne होता है and they leave marks afterwards. I will start applying them वहाँ पे and बहुत ही कम से start करना है as always, बहुत कम से. This is the best way to get a flawless look. Little bit on the chin area. And also guys, keep on mentioning the questions or queries. आपको कोई भी products को लेके या look को लेके, I will keep on answering them. I'm applying it. अगर आपको लगता है कि ज़्यादा की ज़रूरत है तो आप उसको बाद में ऐड करें, पर लेकिन always start with less. I also like to go around my mouth area, around my lips, because I do have a little discoloration here and I like to cancel it out with a darker shade of concealer. मैं कलर करेक्टर के साथ आई जस्ट डोंट गो इन विद द कलर करेक्टर. एक तो वो बहुत ही कंफ्यूजिंग हो जाता है कई बार, यू डोंट नो हाउ मच टू यूज एंड समटाइम्स व्हाट हैपन, हम ज़्यादा लगा लेते हैं एंड देन वी कीप ऑन ब्लेंडिंग इट एंड इन द एंड वी डोंट गेट दैट फ्लॉलेस एंड एंड दैट इवन टोन्ड लुक दैट वी वांट, बिकॉज कलर करेक्शन इज होल अनदर प्रोसेस एंड यू हैव टू नो कि कितना लगा के कितना ब्लेंड करना है. सो इट इज ऑलवेज बेटर कि आप एक डार्कर शेड ऑफ कंसीलर के साथ जाएं rather than using so many colors, green, yellow and orange, all of that. This is the best way to start. मैंने अप्लाई कर लिया है एंड आई विल जस्ट टेक अ ब्यूटी ब्लेंडर, अगेन अ डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर. Always soak your beauty blender in water first. Squeeze all the water out and keep it
फॉर लाइक 2 to 3 minutes टू, ताकि वो थोड़ा ड्राई हो जाए। कभी भी पूरा सोक्ड वेट ब्लेंडर अपने फेस पे नहीं यूज करना, वो आपका लुक खराब करेगा। ब्यूटी ब्लेंडर इज meant to be used damp, and I have already soaked it. It is semi dry and I will use it now. Just a second. बहुत ही स्लो टैपिंग मोशंस के साथ आई विल ब्लेंड। आपको बिल्कुल भी ब्लेंडर को कभी भी ड्रैग नहीं करना। आपको, यू डोंट वांट टू डू दिस, यू जस्ट हैव टू टैप टैप टैप, नथिंग एल्स। सो कीप ऑन ब्लेंडिंग, एंड आपको तब तक ब्लेंड करना है जब तक आपको सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं मिलता। ब्लेंडिंग टेक्स टाइम, बी इट फाउंडेशन, बी इट आई शैडो, ब्लेंडिंग को टाइम लगता है। एंड अनदर टिप इज, आप हमेशा अपने कंसीलर को लगा के अप्लाई करके यू कैन लीव इट फॉर लाइक 40-50 seconds or a minute. What happens is the concealer, the texture becomes tacky and it automatically gives you more coverage rather than applying it and directly फटाफट उसको blend कर दो। वो half of the product blender पे कई बार ट्रांसफर हो जाता है and half of the product comes out and you have to apply more, and ऐसे करते करते you apply so many layers and in the end it becomes cakey. Don't do that. Just leave the concealer for like 30-40 seconds, let it become tacky, and just blend it very slightly at the same place where you applied it. Blend, blend, blend. Take your time with blending. Never rush, because अगर आपने blend सही से नहीं करा तो you are not going to get the look that you are going for. Sometimes many people say कि blending को उतना time लगता है, you just can't do it. It is a very tedious task, बहुत ही मुश्किल है, but you have to take your time with blending. You just can't rush or you just can't hurry. Already you can see, सिर्फ इतना कंसीलर अप्लाई करने से my whole face is looking even. What you want, आपका टोन इवन लगना चाहिए फेस का। दैट इज व्हाट यू वांट टू अचीव अपने फर्स्ट स्टेप में। अगर आप कलर करेक्टर भी यूज करते हैं तो यू वुड हैव लाइक जितनी भी पिगमेंटेशन है उससे वो चली जाती, बिकॉज यू ऑब्वियसली वुड बी यूजिंग अ फाउंडेशन लेटर, बट दिस इज मोर बेटर इन माय पर्सनल ओपिनियन बिकॉज आई लाइक डूइंग दिस एंड दिस इज मोर मच इजियर। अगर आपको अभी भी लगे कि यू नीड मोर, यू कैन ऑलवेज गो इन। आई कैन यूज अ लिटिल मोर यहाँ पे बिकॉज आई डू हैव अ लिटिल एक्ने मार्क। दिस इज द लाइटर वन। आई नीड दी जो कि नीचे गिर गया है, as always being clumsy. So yeah, I'll just use a little more यहाँ पे। हिमांशी, ऑरेंज कलर करेक्टर एंड ग्रीन कलर करेक्टर टोटली डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज होते हैं। ऑरेंज इज टू हाइड एंड कैंसल द डार्कनेस एंड द पिगमेंटेशन दैट यू हैव ऑन योर फेस, एंड ग्रीन इज टू कैंसल द रेडनेस। So you cannot interchange them and you cannot mix and match them. आपको अगर डार्क सर्कल्स हैं, एक्ने मार्क्स हैं, पिगमेंटेशन है, डार्क स्किन टोन है, कहीं पे हाइपर पिगमेंटेशन है, उसके लिए आप ऑरेंज कलर करेक्टर यूज करोगे। अगर आपकी रेडनेस है, रेड पिंपल्स हैं, या कि एनी सॉर्ट ऑफ आपकी रेडनेस है फेस पे, तो आप उसके लिए ग्रीन यूज करोगे। अगेन ब्लेंड 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 ब्लेंड। समटाइम्स अगर आप ज़्यादा प्रेशर लगाते हो ना ब्यूटी ब्लेंडर पे, तो प्रोडक्ट उस पर ट्रांसफर हो जाता है। सो आपको ज़्यादा प्रेशर भी नहीं लगाना, आपको बहुत ही सॉफ्ट हैंड से ब्लेंड करना है। So keep on blending, and guys don't forget, I'll be asking you a question जिसके लिए आपको मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत ध्यान से सुनने पड़ेंगे ताकि आप उस क्वेश्चन को आंसर करके गिव अवे जीत सको। सो प्लीज डू पे अटेंशन। मैंने अपने फोरहेड पे ज़्यादा नहीं लगाया है, जितना भी मेरा प्रोडक्ट कोई अपने ब्लेंडर पे बच गया है, आई एम जस्ट गोइंग इन विद द ब्लेंडर
because I don't need much coverage on my forehead. So yeah. So now the next step is I am going to go in with foundation. This is the foundation I have here. Thank you, Himanshi. Yes, this is best for summer look because summer may it is too hot and you just can't load your face with so many products. This is the foundation, the cream stick foundation that I have with me, and I'm going to start with this. I can just swatch it on my back, on the back of my hand for you guys. You can see कितना creamy है ये and कितनी ज़्यादा full coverage है. You need not apply it बहुत ज़्यादा. Little on this side and little on the other. Little bit on the chin and on the forehead. हम again कम से start करेंगे and we don't want too much product. And इसके लिए now I will start blending in with a brush, a foundation brush, because I need maximum coverage, and that is possible with a foundation brush. And later on, we will go in with the beauty blender. I am blending, taking my time with the blending. Which brush is best? Hello everybody. Which मेरे को आपका क्वेश्चन नहीं समझ में आया हिमांशी. Which brush you are talking about? Blend. Again, take your time with blending. You can see it is so easy to blend. I'm not even doing anything. I am just going in with the brush and I'm blending. And same brush on my nose as well. I just want to make, and also don't forget to take your brush अपने neck पे, because you don't want the neck to look different and your face to look different. How to choose foundation shade? The best way to choose the foundation shade is to, यू कैन गो इन अ स्टोर. फर्स्टली आप स्टोर में जाके आप फाउंडेशन शेड आप चूज कर सकते हो. आप तो या तो टेक 2-3 शेड्स, आप अपने उनको फेस पे स्वॉच करो एंड सी विच वन गोज बेस्ट, इज द नियरेस्ट टू योर स्किन टोन. बिकॉज फाउंडेशन चूजिंग इज अ वेरी आपको एक फाउंडेशन शेड अपना पता होना चाहिए, ताकि आप रेफरेंस के लिए भी कल को उस एक शेड को मेंशन करके आप अपनी फाउंडेशन बाकी की भी बाय कर सकते हो. आजकल बहुत ज़्यादा you see ways on internet of how to choose a foundation. Some like to go lighter, some like to go as the same tone as their own. So it totally depends what kind of a finish and a look you want. Beige is my color. Summer eye makeup look सिखा दो. We will come up with a summer eye makeup look also. बहुत easy होता है वो भी. You just have to know the right shades and the colors that you want to use, and how to blend it nicely. Now आप देख सकते हो मैंने brush use किया पहले. Brush use करने के बाद I use the beauty blender. I use the beauty blender, and the reason I use the beauty blender is to give a flawless base. जितना भी कोई excess product होगा वो beauty blender pick कर लेगा and it will blend it seamlessly without any harsh lines, without any leaving any sort of crease lines. Sometimes what happens with the brush is when you are blending, कई बारी आपके nose के side पे या mouth के side पे इतने अच्छे से वो blend नहीं करता है, and वो lines रह जाती हैं, strokes रह जाते हैं brush के. So you take a beauty blender and blend it. ब्लेंडिंग इज द की गाइस. आपको जब भी फ्लॉलेस मेकअप लुक चाहिए, ब्लेंडिंग इज द की. आपको अच्छे से ब्लेंड करना है. आज कैट आई लाइनर नहीं मैं करने वाली, बिकॉज इट इज बिगनर्स मेकअप लुक, एंड बिगनर्स में कैट आई लाइनर इज लाइक अ टास्क. अदरवाइज ऑल्सो इट इज अ टास्क.
सो हम लाइक अभी आज बेसिक रखेंगे, नेक्स्ट टाइम मे बी वी गो इन विद द कैट आईलाइनर. सो यू कैन सी इट इज ऑल ब्लेंडेड वेरी नाइसली, बहुत ही स्मूथ एंड सीमलेस एंड फ्लॉलेस लग रहा है. सो दिस इज व्हाट वी वांट. अगर मैं चाहूँ तो आई कैन जस्ट स्टॉप here with my base and just go in with some nice blush and highlighter and all of that and just finish it off. But I will go in with lighter shade of concealer now. This is a lighter shade and what I will be doing is I will be highlighting the high points of my face. So I will start when, and again आपको याद रखना है that we have to use very less, बहुत कम use करना है. We don't want to go all in with the with the product. बहुत कम, a little bit here at the corner of my eye, and I'll do the same thing on the other side as well. Then I will use it यहाँ पे at the tip of my nose and here on my cupid's bow as well a little bit. So yeah, that's it. इससे ज़्यादा हम यूज़ नहीं करेंगे because it is a beginner's look firstly. सबसे पहले आपको एक डार्कर शेड के साथ यूज़ करना है, उसके बाद आप फाउंडेशन अप्लाई करें एंड देन आप अपने हाई पॉइंट्स हाईलाइट करें फेस के. हाईलाइट टू हाईलाइट दी फेस, हाइलाइटिंग का मतलब होता है कि आपके जितने भी हाई पॉइंट्स हैं फेस के, like the tip of your nose, like your chin, like your under your eyes, your under eye area, then the center of your forehead, ताकि जब भी आपके फेस के ऊपर लाइट हिट करे and those are the parts that shine and those are the parts that सबसे ज्यादा highlighted दिखें. And again same beauty blender के साथ we will blend it. We will just keep on blending it. Blend, blend, blend. एंड मेक श्योर आप जब भी हाइलाइटर आप अपना सेम ब्यूटी ब्लेंडर के साथ कर रहे हो, आप ब्लेंड कर रहे हो, तो यू हैव टू ब्लेंड इट एट द सेम प्लेस जहाँ पे आपने अप्लाई किया है. आपने अपने कंसीलर को इधर या इधर ड्रैग नहीं करना, वहीं पे ब्लेंड करोगे. यहीं पे आपने ब्लेंड करना है जहाँ पे अप्लाई किया है, बिकॉज दैट इज द एग्जैक्ट पॉइंट यू वांट योर द हाईलाइटेड एरिया. वो आपका हाईलाइटिंग एरिया है और आपको उसी को हाईलाइट करना है, तो आप उसको ड्रैग नहीं करोगे. एज यू कैन सी जहाँ पे मैंने अप्लाई किया है मैं उसको वहीं पे ब्लेंड कर रही हूँ. नाउ आई विल ब्लेंड माय अंडर आईज. ब्लेंड ब्लेंड ब्लेंड. वी विल कम टू कॉन्टोरिंग एज वेल. इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा कॉन्टोरिंग ही होने वाला है. वैसे इतना सफिशिएंट है डेली के लिए, आई वुड जस्ट गो विद इतना, बट आई फील लाइक कि थोड़ा और यूज हो सकता है, सो आई विल जस्ट गो इन अ लिटिल मोर अपने अंडर आई एरिया में, बिकॉज हम हाईलाइट कर रहे हैं, सो इट शुड बी प्रॉपर. सो या दैट्स इट. व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट लीव द कंसीलर फॉर लाइक 30-40 सेकेंड्स. हम वेट करेंगे ये थोड़ा टाकी हो जाए, उसके बाद आई विल ब्लेंड. ब्लशर पर नीट यस टू मैं अभी नेक्स्ट इसके बाद ब्लश यूज करने वाली हूँ एंड आई विल डेफिनेटली गिव यू टिप्स टू हाउ टू ब्लेंड दी कैसे अप्लाई करना है, उसको कैसे ब्लेंड करना है. सो इन अदर 2-3 minutes आई विल बी कमिंग टू ब्लश. Blush is my favorite part. Blush and highlighter, these two are my favorite parts. I love applying blush and I love applying highlighters because blushes and highlighters आपके face को whole another dimension देते हैं and it looks so pretty and it adds color and shine to your face and आपका बहुत ही face lively and fresh लगता है. And now I am blending the concealer with my finger. मैं अपने फिंगर के साथ ब्लेंड कर रही हूँ बिकॉज बहुत ही छोटा एरिया है, एज यू कैन सी अंडर योर आईज बहुत ही छोटा एरिया है एंड यू वांट टू गो ऑल इन.
आप अच्छे से उसको ब्लेंड करें ताकि कोई भी क्रीजेस ना रहे। सेम ऑन दी अदर साइड। अगर आपके पास ब्लेंडर, समटाइम्स ऐसे होता है कि आपके पास ब्लेंडर आपको यूज करना मुश्किल लग रहा है, तो आप अपने फिंगर्स के साथ भी, आप अपने हैंड्स यूज करके भी आप अपनी ब्लेंडिंग कर सकते हो। दैट्स नॉट एन इशू एट ऑल। इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू हैव टू हैव अ ब्रश, अ ब्लेंडर एंड ऑल ऑफ दैट। सो या, यू कैन सी मैंने अप्लाई करके अपने फिंगर के साथ ब्लेंड करा है। अब आई विल गो अ लिटिल, थोड़ा सा ब्लेंडर के साथ, अगर कोई भी एक्सेस प्रोडक्ट होगा तो वो ब्लेंडर पिकअप कर लेगा। वैसे तो आई जस्ट डोंट going like going all the time with the brush then with the blender. I mostly use the blender सबसे ज़्यादा because वो easy रहता है, especially for beginners blender is a easy thing। but ब्रश यूज करना भी बहुत इजी है। ब्रश के साथ आपको एक इवन टोन मिल जाता है, एंड आफ्टर दैट ब्लेंडर के साथ आप सिर्फ उसको टैप टैप करके ब्लेंड करके फिनिश कर सकते हो। एज यू कैन सी, इट इज ऑल ब्लेंडेड। या ब्लेंडर इज द बेस्ट थिंग जो आज तक इन्वेंट हुई है। आई रियली लव blenders। So yeah, as you can see, it is all blended and it is looking all even। एंड अगेन कभी भी अपना फोरहेड नहीं भूलना, अपने फोरहेड को भी इक्वली उतना ही टाइम लेके ब्लेंड करना है, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो यस, नाउ व्हाट वी विल डू, नाउ वी आर गोइंग टू टेक सम पाउडर। अब हम पाउडर लेके जितना भी हमने क्रीम प्रोडक्ट यूज किया है हम उसको सेट करेंगे। एंड आई ऑलवेज like to use a sponge slash wedge like this to apply powder, because ये बहुत ही easy रहता है इससे पाउडर अप्लाई करना आपके आईज के कॉर्नर पे, नोज के कॉर्नर पे। इट फिट्स इन वेरी नाइसली एंड बहुत इजी है इसके साथ अप्लाई करना, लाइक दिस। दिस इज हाउ वी अप्लाई। आप देख सकते हो मैं कितना इजी अपना अंडर आई से पूरा कवर कर पा रही हूँ, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप अपने अंडर आई पे अच्छे से पाउडर पाउडर अप्लाई करो, बिकॉज वी डू हैव फाइन लाइंस अंडर आई एरिया में, एंड वी डू हैव क्रीजेज यहाँ पे, जिसके करके आपका जितना भी क्रीम प्रोडक्ट है वो क्रीज हो जाता है अगर आप वहाँ पे अच्छे से पाउडर अप्लाई नहीं करोगे, एंड इन दी एंड योर मेकअप विल ऑल लुक ऑल क्रीजी एंड दैट इज नॉट व्हाट यू वांट। अगेन आप पाउडर आप ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हो। पाउडर इज समथिंग, स्पेशली समर्स में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज पाउडर इज मस्ट। पाउडर के साथ, पर इतना भी नहीं कि आपका एंड में वो केकी लगे। तो जस्ट गो, आपको जितना रिक्वायर्ड लगता है कि हाँ कितना पाउडर मुझे चाहिए। एंड वन मोर क्विक टिप दैट आई एम गोइंग टू गिव यू इज, जब भी आप अपने अंडर आई एरिया पे आप पाउडर अप्लाई करो, हमेशा ब्लेंडेड पहले विद योर फिंगर और अ ब्यूटी ब्लेंडर, बिकॉज यू हैव क्रीसेस। अगर जैसे मैं अभी बात भी कर रही हूँ एंड देर देर विल बी क्रीसेस, बिकॉज आई हैव फाइन लाइंस, वी हैव क्रीसेस। एंड जितना भी क्रीम प्रोडक्ट होता है वो 2 या 3 सेकेंड्स में वो क्रीज के अंदर सेटल हो जाता है। एंड अगर हम उसके ऊपर से उसको पाउडर कर देंगे तो वो वहीं पे सेट हो जाएगा जहाँ पे उसकी क्रीज बनी है। एंड हमें क्रीजी लुक बिल्कुल भी नहीं चाहिए। सो ऑलवेज, बी एट, अगर मैं आपसे बात ही कर रही हूँ, बात करते करते मैं डायरेक्टली अप्लाई कर दूँ, यहाँ पे ऑलरेडी क्रीज बन चुका है, एंड दैट इज नॉट व्हाट आई वांट। सो ऑलवेज ऑलवेज फर्स्ट चेक कि आपने अपना जितना भी कोई क्रीज है आपने ब्लेंड कर लिया उसको, एंड उसके बाद आप पाउडर अप्लाई कर रहे हो। नाउ आई ब्लेंडेड दी क्रीज। अगर कुछ भी यहाँ पे डिपॉजिट हुआ था प्रोडक्ट, तो अब मैं उसको पाउडर करूंगी। I like using thoda ज़्यादा powder because I tend to get sweaty and oily. I do have like oily skin, so I do need powder अच्छे से। So yeah, loose powder or compact,
I personally like using loose powder because the purpose of loose powder is to set your makeup. कॉम्पैक्ट पाउडर सेट करने के साथ साथ आपको थोड़ी कवरेज भी देता है, एंड कॉम्पैक्ट पाउडर इज नॉट दैट हेवी पाउडर. अगर आपको समर्स के लिए अपना मेकअप अच्छे से सेट करना है तो आप एक लूज पाउडर यूज करें, दैट इज द बेस्ट पाउडर, बिकॉज उसके साथ आपका मेकअप डे के एंड तक पूरा सेट रहेगा एंड बिल्कुल भी बज नहीं करेगा. सो दैट इज व्हाट यू वांट. एंड एज यू कैन सी आई एम अप्लाइंग पाउडर यहाँ पे अपने नोज के साइड पे एंड एट दी साइड ऑफ माई माउथ लिप्स, बिकॉज मेरे यहाँ पे क्रीजेस बनते हैं. आई हैव स्माइल लाइन्स एंड ऑल ऑफ दैट. सो यहाँ पे मेरा हमेशा जितना भी कोई क्रीम प्रोडक्ट है वो क्रीज होता है. सो आई डोंट वांट दैट. सो आई हैव टू सेट इट वेरी नाइसली विद पाउडर. एंड ऑल्सो कभी भी पाउडर को लेके आपको अपनी स्किन को अगेन ऐसे ऐसे ड्रैग नहीं करना है. आपको टैपिंग मोशन के साथ अपने पाउडर को स्किन के अंदर प्रेस करना है. दिस इज द वे इट लुक्स seamless and flawless in the end. जस्ट प्रेस द पाउडर इनटू योर स्किन ताकि बाद में वो आपके स्किन में मेल्ट हो जाए एंड डजंट लुक केकी एट ऑल और पाउडरी एट ऑल. Shivani, the difference between loose powder and compact powder is loose powder is mainly to set the makeup as it is in a loose form, and you can see that. कॉम्पैक्ट पाउडर भी सेम पर्पस सॉल्व करता है, बट इट डजंट लास्ट मच, स्पेशली यहाँ के समर्स में, समर सीजन में इतना वो लास्ट नहीं करता. इट गिव्स अ लिटिल बिट ऑफ कवरेज एंड लिटिल बिट ऑफ द सेटिंग इफेक्ट, बट इट इज बेटर टू यूज अ लूज पाउडर इफ आपको लॉन्ग लास्टिंग लुक चाहिए एंड यू वांट कि आपका मेकअप सारा समर सारा दिन समर्स में बज ना करे. सो इट इज बेस्ट. I'm using a lot of powder because I tend to get oily on my T-zone and on my chin and at the side of my nose. And what I'll be doing, I'll leave the powder for like 30 seconds and उसके बाद हम इसको dust off कर देंगे. Sweat नहीं आता, right? Yeah, exactly. स्वेट अगर आएगा भी तो इट विल द पाउडर जो आपने लूज पाउडर अप्लाई किया है वो आपके स्वेट की वजह से वो उसको खराब नहीं होने देगा, अपनी प्लेस पे रहेगा. अगर आपने पाउडर लूज पाउडर नहीं ऐसे अप्लाई करोगे या इतनी आप रेस्ट इट्स टोटली अपॉन योर लाइकिंग. अगर आपका ड्राई स्किन है तो आप इतना भी पाउडर मत यूज करें. मेरा ऑयली स्किन है तो व्हेन समर्स में मैं आई टेंड टू स्वेट and my skin tends to become oily, so I have to use इतना powder. अगर आपका dry skin है तो आप इतना powder मत use करें. You can also go in with the compact then dry skin के लिए. Oily skin के लिए you can use loose powders and you can apply इतनी quantity में and leave them for 30 seconds ताकि वो आपके skin में properly अच्छे से उसको set करें and day के end तक बिल्कुल भी बज ना होने दें. So this is it. हमने ये पाउडर अप्लाई कर लिया है एंड हम इसको 30 सेकंड्स के लिए छोड़ेंगे एंड देन आफ्टर दैट वी विल डस्ट इट ऑफ. हाँ जी, बिल्कुल कंट्रोल करेगा स्वेट को. थैंक यू हिमांशी, थैंक यू सो मच. दैट इज सो स्वीट ऑफ यू. Yes, foundation shade name, please. I will just let you know the foundation shade name. It is Ivory One. It is Ivory One, and this is how it looks. It is a very very pretty shade and it is very creamy. It is very full coverage and also long lasting. ये बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है. ये बिल्कुल भी डे के एंड तक बिल्कुल भी बज नहीं करता है, बिल्कुल भी क्रैक नहीं करता या बहुत फ्लॉलेस लगता है. सो व्हाट नाउ आई एम डूइंग इज आई एम टेकिंग अ ब्रश लाइक दिस जो कि ऊपर से फ्लफी है एंड साइड से फ्लैट है, एंड आई विल स्टार्ट dusting off the excess powder. What you can also do is that ऐसा ब्रश लेके आप सिर्फ जितना एक्सेस पाउडर है उसको अपनी स्किन के अंदर टैप करें rather than just swiping it off. आपको बिल्कुल भी इसको ऐसे स्वाइप नहीं करना, ज्यादा स्किन के ऊपर प्रेशर नहीं लगाना. यू जस्ट हैव टू टैप टैप टैप. बी इट अ ब्लेंडर, बी इट अ पाउडर ब्रश, बी इट अ ब्लश ब्रश या फाउंडेशन, कोई भी ब्रश हो उसको कभी भी अपने स्किन पे हार्शली यूज नहीं करना. आपको बहुत ही स्लोली एंड बहुत ही सॉफ्ट हैंड से उसको सिर्फ टैप करना है. जितना भी कोई एक्सेस पाउडर होगा वो मेरी बाकी स्किन पे भी बाकी एरियाज पे भी लग जाएगा फेस के. सो दिस इज द रीजन आई एम गोइंग ऑल ओवर माई फेस एंड इन दिस वे आई डोंट हैव टू यूज एक्स्ट्रा पाउडर.
अगर ये करने के बाद भी आपको लगे कि यू डू नीड एक्स्ट्रा पाउडर, देन यू कैन यूज एक्स्ट्रा पाउडर थोड़ा सा और। एंड द सेम थिंग आई विल डू अपने अंडर आईज में। अब आई विल जस्ट वेरी लाइटली डस्ट इट ऑफ। मैं बिल्कुल भी ज्यादा ऐसे प्रेशर नहीं लगा रही, एज यू कैन सी वेरी लाइटली आई एम जस्ट डस्टिंग इट ऑफ on the other side also. So yeah, वी आर डन विद द पाउडर। अगर आपको लगे कि अभी भी ज़्यादा पाउडर आपके फेस पे है एंड अच्छे से प्रेस नहीं हुआ या अच्छे से रिमूव नहीं हुआ, यू कैन ऑलवेज टेक द सेम ब्यूटी ब्लेंडर एंड यू कैन जस्ट गो इन अगेन। व्हाट द ब्यूटी ब्लेंडर विल डू, अगर कोई भी एक्सेस पाउडर लगा होगा तो वो उस पाउडर को रिमूव कर देगा, बिकॉज इट विल सोक इट। सो या, हमारा फेस पाउडर हो चुका है एंड नेक्स्ट स्टेप इज टू कॉन्टोर। मैम वो भी टिप भी शेयर करना जो आई के ऊपर पाउडर लगा के देन अप्लाई मस्कारा या Armandeep, it is very easy. All you have to do is take a spoolie and then apply some powder on your eyelashes and then go over with the mascara, because it makes the mascara long lasting and वो ज़्यादा देर तक stay करता है. That is a very nice tip too. Please tell me about translucent powder. Do let me know आपको translucent powder के बारे में क्या जानना चाहते हो. I will answer it for sure. And which brand brush you have? Which brand? I have so many brands. मेरे पास बहुत सारे brands हैं. Over the years, I have experimented with brushes and blenders. And मैंने अलग-अलग brand से अलग-अलग type of brushes इकट्ठा किए हैं, which I like using. So yeah, okay, it is blended. Now I'm going to take a darker shade in the same foundation contour stick, and this is the shade that I'm going to use for contouring. Again, it is very creamy, it is very blendable, very easy to blend, and I will show you how to contour. क्रीम कॉन्टोर के साथ अगेन यू हैव टू स्टार्ट विद वेरी लेस, बहुत कम से स्टार्ट करना है आपको, बहुत ज़्यादा क्रीम प्रोडक्ट नहीं यूज़ करना, बिकॉज क्रीम प्रोडक्ट टेंड्स टू एक बार लग जाएगा तो इट इज़ नॉट ईजी टू रिमूव. सो या, दिस इज द प्रोडक्ट एंड आई विल ऑलवेज ऑलवेज मेक अ फेस लाइक डक फेस. अगर आपको नहीं पता कि आपको अपना कॉन्टोर कहाँ पे प्लेस करना है, इट बिकम्स वेरी इजी. अगर आप डायरेक्टली कई बार ऐसे जाओगे, यू डोंट नो हाउ हाई और हाउ लो टू गो विद द कॉन्टोर. सो ऑलवेज मेक अ फेस लाइक दिस एंड एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ योर ईयर, जहाँ से आपका कान शुरू होता है, ईयर आपका स्टार्ट होता है, वहां से आप उसकी डायरेक्शन लें एंड सेंटर तक ऑलमोस्ट 1/4 तक अपने कॉन्टोर को प्लेस करें, लाइक दिस. दैट्स इट. इससे ज्यादा आपको नहीं करना, आपको इससे नीचे नहीं लेके आना, यहाँ तक नहीं लेके आना, सिर्फ यहाँ तक सेंटर तक प्लेस करना है. द सेम थिंग आई विल बी डूइंग ऑन द अदर साइड. दैट्स इट. A little bit on my forehead, only at the center part, and a little bit on my under my chin. इससे ज़्यादा आई एम नॉट गोइंग टू अप्लाई कॉन्टोर, बिकॉज इससे ज़्यादा इफ़ आई विल तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा एंड इसको बाद में रिमूव करना बहुत ही मुश्किल है. Shade name, yes, the shade name is Toffee 6. It is Toffee 6. And now इसको blend करने के लिए firstly I will go in with a brush. You can see this is a brush जो side से flat है and top से it's fluffy. As you can see, I already have so much of like contour, product on it, because ये contouring के लिए है, and I use it for contouring. It is very easy to blend. What I will do is just again tapping motions में आपको blend करना है.
एंड जहाँ पे आपने कॉन्टोर को अप्लाई किया है आपको वहीं पे उसको ब्लेंड करना है, उसको नीचे नहीं ड्रैग करना, नीचे तो बिल्कुल भी नहीं करना, यू कैन गो अ लिटिल बिट अपवर्ड्स बिकॉज यू वांट योर फेस टू लुक अपलिफ्टेड एंड आप उसको आप फेस को डाउनवर्ड नहीं लेके आना। एज यू कैन सी कितना ही ब्यूटीफुली एंड कितना ही इजीली ये प्रोडक्ट ब्लेंड हो चुका है। आई हैव जस्ट टैप्ड इट लाइक व्हाट 3 4 टाइम्स एंड इट इज ऑलरेडी ब्लेंडेड। Same thing on the other side. You can see it is looking so beautiful, इतना seamlessly blend हुआ है, it is so creamy and I totally love using this product contouring के लिए। अगेन आपको अपने कॉन्टोर को वहीं पे ब्लेंड करना है जहाँ पे आपने उसको अप्लाई किया है, ज़्यादा ड्रैग नहीं करना उसको। सो या अब हम अगेन अपना ब्लेंडर लेंगे, ब्लेंडर के साथ वी विल गो इसके ऊपर। अगेन जितना भी कोई ज़्यादा एक्सेस प्रोडक्ट होगा ब्लेंडर विल उसको ब्लेंड करके सोक कर लेगा। सो यस यू कैन सी ऑलरेडी इतना सीमलेस है, इतना फ्लॉलेस है, यू जस्ट कैन नॉट मेक आउट कि हमने इतना डार्क शेड ऑफ कॉन्टोर यूज किया था या हमने यहाँ पे एक्चुअल में क्रीम प्रोडक्ट करके उसको हमने कॉन्टोर किया है। इट इज लुकिंग सो नेचुरल येट कॉन्टोर्ड एंड ऑल स्नैच्ड। दिस इज व्हाट यू वांट। The next step is to go in with the blush. Again I am going to use a cream blush and this is the blush। मैंने अपने लास्ट लाइफ में भी इसको यूज किया था एंड आई हैव लव्ड इट। ये बहुत ही सुंदर कोरल ब्लश है, एज यू कैन सी। अगेन आई जस्ट वॉच इट एट द बैक ऑफ माई हैंड। आप ये देख सकते हो कितना सुंदर प्रिटी कलर है। थैंक यू हिमांशी। कितना प्रिटी कलर है, इट इज सच अ ब्यूटीफुल कोरल कलर, perfect for summers। दिस इज द काइंड ऑफ कलर दैट यू नीड ऑन योर चीक्स टू गिव दैट इंस्टेंट फ्लश लुक। बहुत प्रिटी है, बहुत सुंदर है। एंड अपने हैंड के बैक पे लेके आई एम गोइंग टू अप्लाई इट with a finger। Now to apply the tip to apply your blush is to at the high points of जहाँ पे आपने कॉन्टोर आपने प्लेस किया है आप अगेन आप डक फेस बनाएं एंड हाई पॉइंट्स पे अपने ब्लश को प्लेस करें। दिस इज द easiest way to apply a blush because I like giving my face a lifted look। So this is where my blush placement goes। Again start with less and add more। अगर आपको लगे you need more some you need some more color and you need some more product, otherwise always use less। blend। You can already see मैंने इतना कम यूज किया है and it has given me so much color। I will use थोड़ा सा और। This is such a pretty shade, इतना सुंदर शेड है। I just love using it। You can see I'm building the product, I am not going all in just once, I am building it slowly। See how pretty it is। In makeup this is the best thing to do। Build your layers, build your products एक बारी में, कभी भी don't use ज़्यादा। So yeah, I guess this is enough। And now I will take the blender and blend it with the same beauty blender।
favorite, yeah. Bronzer is to just add a little warmth to your face. It is not the same as contour. वो contouring के लिए नहीं होता. Bronzer is to add a little warmth to your face. Sorry. जैसे ही आपने कॉन्टोर यूज किया है, आप उसकी जगह पे अगर आप कॉन्टोर के साथ साथ अपने फेस में थोड़ी वार्मथ ऐड करना चाहते हो तो आप ब्रॉन्जर यूज कर सकते हो. बट इन माय ओपिनियन अगर आपने कॉन्टोर किया है तो इट इज प्रिटी मच यू आर गुड विद इट. Still you want to go in with the bronzer, then you can always go in. Indian skin tones पे I personally like contouring and then adding a blush rather than a bronzer. आप अगर contour को skip करके directly bronze करना चाहते हो तो that is much very अच्छी option. So as you can see, it is all blended. Yeah, it is looking natural. That is what I always go for. I like it natural. I like it as minimal as possible. So इसके बाद now we are going a little bit eyes पे. This is the kajal I have from NYA, the big apple of my eye. It is very 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 nice kajal guys. मैंने इसको इतनी सारी looks में use किया है, अपनी इतनी makeup look में use किया है, अपनी brides के ऊपर use किया है. It looks very pretty. बहुत ही basic इसको use करने वाली हूँ. What I am going to do, I am just going to line my lower waterline. Like this, very slowly. You can see कितना ज़्यादा pigmented है, and सिर्फ in like in one stroke it has given me so much of high pigmented color, black color on my waterline. Sometimes काजल्स होते हैं you keep on applying it, उसके बाद भी इतना pigment नहीं आता है. This is a very pigmented and a very long lasting, and ये बिल्कुल भी smudge नहीं करता. आप इसको सुबह से लेकर रात तक भी वेयर करोगे तो ये बिल्कुल smudge नहीं करता. This is a very very good काजल. मैंने अपने वाटर लाइन पे इसको अप्लाई किया है एंड आई लव wearing this kajal all the time. So yes, and you see, मैं आपको just in a second I will show it to you कि this is so pigmented. और ये ब्लेंड भी बहुत इजीली होता है. इसके साथ एक स्मोकी लुक भी बहुत इजीली क्रिएट कर सकते हो बिकॉज इट इज वेरी ब्लेंडेबल. एक बार ब्लेंड होने के बाद ये बिल्कुल सेट हो जाता है, बिल्कुल भी ब्लीड नहीं होता. यू कैन सी दिस इज सो सो ब्लेंडेबल. What I'm going to do now is I'm going to take a brush like this. This is the brush, if you can see. It is a smudger brush. ये fluffy है, ये fluffy है ऊपर से. And I will just blend my kajal a little. जहाँ पे मैंने अप्लाई किया है वहीं पे उसको मैं हल्का सा सिर्फ बहुत ही स्मॉल और सॉफ्ट मोशंस के साथ आई विल ब्लेंड. अगर आप चाहो तो आप इसी सेम ब्रश के साथ आप अपना प्रोडक्ट जहाँ पे आपने अप्लाई किया है इसको थोड़ा इन एन एंगल्ड वे जस्ट पुश इट आउटवर्ड्स. व्हाट इट डज, ये आपके आई को ऑटोमेटिकली लिफ्टेड लुक देता है. यू कैन ऑलरेडी सी. अगेन आई एम ब्लेंडिंग बहुत ही स्लोली विद अ सॉफ्ट हैंड. अंडर आई एरिया है तो इसको बिल्कुल भी हार्शली रब नहीं करोगे. ब्लेंड जब तक यू आर नॉट satisfied कि दिस इज द इंटेंसिटी एंड दिस इज द amount of kajal that you want. So you can see it is so pretty. मैंने like it is like
सो ग्लैम आप इसमें आप अगर आप चाहो तो यू कैन डू द सेम थिंग ऑन दी ऑन दी अपर lash line as well, and you're good to go for a party. This is how you can make it like a simple look into a glam one. You can attend a party, you can attend the night event or something and it looks also glam. आप इसके बाद mascara add on करो and it looks very glamorous too. And yes, we are done with the eyes, and I will just take a mascara and I will take any mascara you like, लेंथनिंग हो, जो आपके लैशेस पे वॉल्यूम ऐड करे. टेक अ मस्कारा एंड अप्लाई अ नाइस कोट. योर आई लैशेज आर, मेरे आई लैशेज बहुत छोटे हैं एंड आई लाइक यूजिंग लेंथनिंग मस्काराज एंड आई लाइक एडिंग वॉल्यूम. सो आप अपने मस्कारा के साथ बहुत ही केयरफुली पिक करें अपने मस्कारा को. आप फिगर आउट करो कि आपको लेंथ चाहिए, वॉल्यूम चाहिए अपने मस्कारा उसमें, आई लैशेज में, या यू वांट बोथ, and then pick a mascara. I do need both these things, so I tend to pick mascaras जो लेंथ भी प्रोवाइड करे एंड वॉल्यूम भी प्रोवाइड करे. इफ नॉट आई लाइक मिक्सिंग मस्काराज बिकॉज मुझे डिफरेंट काइंड ऑफ बॉन्ड्स एंड मस्काराज यूज करना बहुत अच्छा लगता है एंड आई डू मिक्स देम अप. So okay, I am done with mascara. This is like sufficient for me right now because हम beginner look कर रहे हैं and हम basic look कर रहे हैं. So this is it. Now I'm going to go in with lipstick. And also guys, I'll be asking you the question very soon. And अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आपको पता होगा what the answer is. And I want कि आप उसको comment section में अपने आंसर को drop down करो. And उसके बाद we'll see कौन सही आंसर करता है. So this is the lipstick that I am going to use. This is the NY Bay liquid lipstick. It is a very very pretty nude pink color, and I love wearing nude colors, and it is one of my favorite nude colors. And also ये mattifying है and it is a matte lipstick, so it doesn't बिल्कुल भी बज नहीं करती है and it doesn't bleed. मैंने बहुत लिपस्टिक्स देखी हैं जो bleed कर जाती हैं after a while, and this doesn't bleed at all. I am going to go directly with the wand. इसका wand भी बहुत easy to use है, बहुत ही smoothly you can apply. You can see just in a like what 30 seconds. I love this color. Can you name concealer please? Yes, of course. The concealer, this is the concealer that I've used, NY Beka concealer in the shade 02 and 04. In the shade 02 and 04. Eyes looking beautiful. Thank you. What brand you are using, ma'am? What are you asking for? किस चीज़ का brand आप पूछ रहे हो? I'm using all NYB के products यहाँ पे. They are too affordable. Also, guys, you can use MISHA 01 code to get 25% flat off. इतने affordable products पे you can get 25% off. आप अभी अगर जाओगे एंड आप उनको कार्ट में ऐड करोगे, यू विल गेट 25% ऑफ. कोड यूज करो MISHA 01 एंड get these amazing products discounted prices पे and grab them. This is next. I'm using this shimmer drops liquid highlighter. मैंने अपने लास्ट वीडियो में इसको यूज किया था एंड आई लव्ड इट. ये बहुत ही प्रिटी, बहुत ही सुंदर हाइलाइटर है. मैंने इसके बाद इसको लाइक डेली यूज किया है. इट्स बिन 3 days एंड आई ऑलरेडी यूज इट 10 times. इट इज अ वेरी 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 प्रिटी हाइलाइटर एंड मैंने अभी स्वॉच किया है अपने हैंड के बैक पे एंड आई शो इट टू यू. You can see it is such a pretty highlighter. It is a champagne highlighter. It is very very pretty and it blends very smoothly. मैंने अपने
हैंड पे लेके विद द फिंगर आई एम गोइंग टू अप्लाई जहाँ पे हमने हाईलाइट किया था अपने हाई पॉइंट्स पे, आई एम गोइंग टू अप्लाई इट देयर. You can just see this is so pretty. It is adding the right amount of glow to my skin. It feels so natural, it looks so natural. Guys, what is okay? Now I'm going to ask you the question. What is the tip that I gave you? कि before applying powder, what is necessary that you have to do so that आपका मेकअप क्रीसलेस लगे एंड लॉन्ग लास्टिंग लगे? व्हाट इज द टिप जो मैंने आपको दिया था पाउडर अप्लाई करने से पहले टू मेक योर look creaseless and long lasting all day long? You can leave the answer in the comment section. I will apply a little यहाँ पे. I will go in a little more because I am so fond of highlighters. Highlighters are my favorite. बिना highlighter के I just cannot go out anywhere. Little more. This is so pretty. Little bit under my brow. You can see this is so looking so natural and so glowy and so pretty. I am just totally loving it. मैंने फिंगर्स के साथ अप्लाई किया है बिकॉज इट इज़ वेरी इजी टू अप्लाई विथ फिंगर्स इतने शॉर्ट एरियाज पे. अगर आप चाहो तो आप ब्रश के साथ भी कर सकते हो. यू कैन गो इन विद अ highlighter brush and अब मैं ब्लेंडर लेके आई विल जस्ट ब्लेंड इट so that it looks all seamless and flawless and all blended. And I will go a little bit in with the lipstick. As you can see, it is so super matte and it doesn't budges at all. Guys, the question, I hope आप सबने क्वेश्चन सुना है. द क्वेश्चन इज कि मैंने वो क्या टिप है जो आपको दिया था पाउडर अप्लाई करने से पहले कि हाउ टू अप्लाई पाउडर सो दैट it is creaseless and long lasting till the end of the day. What was the tip that I mentioned? आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हो एंड जिसने ध्यान से सुना होगा उसको पता होगा व्हाट वाज द टिप. सो लेट्स सी किसने ध्यान से सुना एंड हु हैज द राइट आंसर. एंड दिस इज द look that I have, the beginner makeup look. Now I'm going to open my hair a bit. You can see it is so simple. All we have done is we went in with the darker shade of concealer. Uske baad we went in with foundation, then the lighter shade of concealer, some kajal and lipstick, and good to go with thoda sa blush and highlighter add करके. This is the look we have got. This is looking so pretty. अगर हम चाहें तो इसके साथ अपने आईज के ऊपर हल्का सा आई शेडो अप्लाई करके वी कैन ऑल्सो मेक इट अ कंप्लीट पार्टी लुक एंड इट इज गोइंग टू लुक वेरी प्रिटी. आप अपने आउटफिट्स के अकॉर्डिंगली आप अपना लिप शेड चेंज कर सकते हो अपना. आप चाहो आजकल कलर्स इतने ज्यादा इन है, आप चाहो तो यू कैन ऑल्सो गो इन विद कलर्ड काजल्स. वो इतने ही इन है. कलर्ड आई लाइनर्स NYB के बहुत प्रिटी बहुत सुंदर कलर्ड आई लाइनर्स है, आप उनके साथ जा सकते हो. यू कैन यूज माई कोड MISHA01 एंड आप उनके पर्पल की साइट पे जाओ और आपको 25% ऑफ मिलेगा. देयर इज ऑलरेडी सेल गोइंग ऑन पर्पल एंड आप मेरा कोड अप्लाई करोगे तो यू विल गेट फ्लैट 25% ऑफ. इतने अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स पे इफ यू आर गोइंग टू गेट 25% ऑफ, दिस इज द बेस्ट थिंग. it is a steal. It is a deal that you should not miss. So please do go in on the app or the site and get your products. So okay guys, I will end the live session here and we will meet super soon. Hope to see you soon all and bye bye, take care.